खाई गला एति थाले बिरयानी तो कौन है ना एबे आमे से सफारी टा सरीगला तो आउ किछिटा पॉइंट्स अच्छी बर्ड मान को देखिया पाई कि एलिफेंट ये से तो अच्छी कि नहीं मैं जानी बट मैप अनुसार से सब देखिया पाई तुमको वॉक करके जाया पड़ो सो आम वॉक करके कार पार्किंग करके वॉक करके चलीचु आ कौन एनिमल माने अच्छी ये पिकक अच्छा पिकक पॉइंट को आम से चलचे पिकक देखा पड़ो आ कौन कौन अच्छी तो से आमको चलिकी आउ जहाँ जगह को आउ जो सब जिनस अच्छी से सब आम माने ये कार रे जाई होबनी सो वॉक करी जाबे पड़ो सो वॉक करके आम ए चलीचु बोट भितर तो ये हमको लाइन रे छिड़ा है कि जावाई पड़ो कौन अच्छी के जने से भितर गले जना पड़ो एंट्रेंस टा पटे हाँ बसवा तो क्या लगुच बढ़िया थैंक यू सो मच बाहर आम जा देखा जाऊ कौन अच्छी आम तो जाने कौन अच्छी ता भितर देखा जाऊ कौन अच्छी बापा माँ को देखुची कौन अच्छी कौन अच्छी जी तो आ भितर एमती खाली राइड करेबो वाटर भितर ना कौन Good afternoon, everyone, and welcome to the African Queen Boat Cruise. Housed inside of heated barns on the property because they are sensitive to the cold. And unfortunately, the survival of many animals, especially the primates, is they do have a black and white barred tail. एड़ा कौन को बर्ड एड़ा सही गुज उड़ा एड़ा गुज ना अरे एमती टाइप रो गुज तमे को छुआ उड़ा दे बत्तक छुआ On this island, on the right-hand side here, you will see a family of Canadian geese. Canadian. Although this island is not their home. Hands and legs. His name is Bieber, and he is the black-handed spider monkey. Okay. And Flippin' Bieber uses his tail to hold onto that post for balance there. सी monkey And on the island to our left coming up, we do have our black and white ruffed lemurs. They might be hiding inside their huts, or they might be just outside their huts. He was born here in March of 2018, and his name is Sylvester. The mother is the fluffiest one, and her name is Gina. And the father's name is Alfonso. They do have bright white rings around their faces, with white hands and feet. They do like to hide out in the shade of the trees during the heat of the day. And if you are ever walking around the safari or the park and you hear a loud whooping noise, swing करके रही थी देखो monkey टा agility. And these spider monkeys do live between Mexico and Panama. And they travel in small bands in forest trees, moving swiftly by making tremendous leaps. Once I have opened the gates and I'm off the boat on the right-hand side, you are welcome to stand up and exit. I just ask that you please watch your step as you exit the boat. And if you do have any questions about the tour or safari in general, please ask and I will... आमे बुली बुली पूरा थकी गलु माने एते समय माने खरा माने थकीबार किछि नाही एनीवे कार तो बुलथुलु किछि माने थकिनु किनु बट एते खराटा एते माने टाण अछि जे फिर भी माने 2 आवर्स ऊपर आमे बुली सालुनी तो फाइनली गोटे रेस्टरूम को आसलु माने तारी भितर से सफारी भितर गोटे रेस्टोरेंट गोटे अच्छी तो से रेस्टोरेंट को आसचु टिके माने सानवी ପାଇଁ फ्राइज आ चिकन विकेन एटा टिके खाई दे कि पुनी आउ अच्छी आउ किछि छोटो मोटो टिके अच्छी बुलिया ପାଇଁ सेटा बुली कि पुनी आमे पळेबु आमे खाई सारी कि एबे जस्ट बाहरिलु आउ टिके जहा 5टा ऑलरेडी हे गलानी 5टा माने एठी पूरा क्लोज एटा तो आम यहाँ ऑलमोस्ट माने
पूरा माने अलग गेट गुड़ा सब क्लोज मोज हो गलानी आ जोड़ा टिके टिके बाकी अच्छी आमे माने आसीचु ताको बुलिकी देखि सारदिबा एटा गोटे एठी गोटे वाटर पार्क मैं एटा टिके जल्दी आस्थिने आमे आराम से वाटर पार्क ता खेली पारथंदा से केते बड़ पार्क ता अछि एटिके पिला मानक पई टिके गेम खेलिया पई एठी अछि गेमिंग सेक्शन ता एटा देखि पाथे केते बड़ वाटर पार्क ता अछि ने स्लाइड ये सांभी केबे से वाटर पार्क पे खेलिनी सो एटा से काफी एंजॉय करथांदा किंतु आमे तो ना आउटफिट नहीं के आछे ना एबे आउ टाइम भी अछि बिकॉज ऑलमोस्ट 5टा ही गलानी सो खाली टिके देखि कि पळै छिबा बढ़िया है जो वाटर पार्क ता पूरा वाटर रे सोडे स्लाइड लाइट बहुत भल अच्छी आमे फास्ट आसी ना 10टा 11टा बेलू माने डिफरेंट काइंड ऑफ आउल गुड़ा अच्छा ये खाइबे सी पड़े कौटी कहीं देखिया ओहो ओके 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 सही पटे अच्छी ये कहीं को लुची ओ एठी अछि हाँ ये से आजिकल माने पेचा गुड़ा अच्छी आउल गुड़ा खाली अच्छा एठी कहीं एठी तो ये गोटे ट्रेन जीवाई सफारी ट्रेन रे बुलिया केते लाइन लगी लोक पूरा बसी आमे जदि टाइम हम पुणी बैक करवा ना पड़ेगा गला खाली गला ठीक बहुत ब्यूटीफुल है ना पूरा ग्रीनरी भितर बर्ड्स मान को रखाई आ सेपटे पूरा लायन बहुत सुंदर है छोट छोट शॉप भी अच्छे आ भितर अच्छी जे गिफ्ट किण कि टी शर्ट्स किण तो ये बढ़िया बहुत सुंदर माने नेचुरल ब्यूटी बहुत भल देखा शुईगला ना हाँ शुई जाओ आम बुलवा ये केमती गोटे माने कौनटा गोटे बाहर वाटर टाइप रो बाहर बट स्टीम भाया है बाहर भल लगुच कौन गोटे रेप्टाइल शो देखेबे सो आम मैंने आसचे समस्ते ये आसी बसी सो लोक मैंने तो ये बहुत खरा हो तो शोटा देखिकी जीवा कौन करूँ देखी So we're lucky. Tank's still pretty small, which means we can still lift him up with our big strong muscles. But if he gets much bigger, we're going to need a little going to start wheeling him in for you guys to run away from predators or to go and grab some leafy greens to munch on. Because remember, he loves his vegetables. He also has that little wiggle when he's letting Abby know he wants to go on the ground. Our females are the smallest in the world. At full grown, Mr. Wiggles is... Now, they're not the heaviest. That record is held by the green anaconda. Female green anacondas can get about 18 feet long, but weigh over 500 pounds. They are big, chunky monkeys. Gypsy will not get that heavy, but she'll get a whole...
बेबी हाँ दीटा ना बे बहुत अच्छे 5टा खंडे এটি এলিফ্যান্ট এবে দেখিয়া পাই আসছে এটা এই লায়ন সাফারির এটা লাস্ট পয়েন্টটা সো এটা বে বাটলা উঠাই দিও তো কই দিও উঠি তো বগুলু এলিফ্যান্ট কই দিও বগুলু ସାଣ୍ଡି ତାର ଏତେ ଥକି ହେଇଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଆନିମଲ୍ସକୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି ଫାଇନାଲି ତ ଏଇଟା ବେବି ଅଛି ବେବି ବି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଯିବା ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଟ୍ରେନଟା ଥିବ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ପଳେଇବା ନହେଲେ ପଳେଇବା से गोटे ही आमर बाकी ऑलमोस्ट सबू आम सरीगला आउ ओनली गोटे ट्रेन जर्नी सेटा ही बाकी रहीगला सेटा तो मुझे देखली आपण के माने लोक छिड़ा होते लाइन रे जदि से क्लीयर हो जाइए आम से ट्रेन जर्नीटा करवा से माने पूरा बुलेब सी माने गोटे राइड दब ट्रेन राइड नहेले जदि बहुत भिड़ हो आमे ताले पळेबा से गुटिया बाकी रही जीव ना और सब पूरा बुलिकी सारी सारे बहुत मस्त अच्छी लायन सफारीटा केमती अच्छी बहुत ही भलो तमर सब गुटिए माने मु क्वेश्चन करी जीतू केमती अच्छी बहुत भलो जीतू कौट जाऊे लायन सफारी माने ए जे वन माने एक मार्किया क्वेश्चन रो आंसर तुमको सब भल लागुला बोधे हैं तुमने बेसी कथा कहि आसेनी ना साई साई नेचर हाँ ना किसी भी कौच सो आम से जाऊे देखा तापर देखिकी माने जदि माने भिड़ थी तापर घर को पलैबा से गोटे बाकी रही मिसटा माने स्टीम टाइप अति खरा रे सब बर्ड ये देख ये कौन अच्छे एपटे देख किंग ऑफ और ये सागुणा बसी डेणा मेले भाई सेगुणा शुई बेचारा मनीष देखते तुम बचती आउ कि मु बचती कहीं तुम स्क्रीन रही तुम रही हाँ स्क्रीन तुम अनेब एमती शुई थी आउ कि मु भी लोक देखी कहीं नथिबे एकुटिया बंची थी धर सेटा देखिबे एटा कुचाली सागुणा एटा एक्चुअल सागुणा एटा जे बसी थाए ना जमती गोटे रेप्टाइल शो देखली एठी सेमती गोटे बर्ड्स मानकर गोटे शो अच्छी सो एबे सेटा माने आसीचु सीट चलो सीट खरा पड़ुनी तो एबे से शोटा हम फाइनाली आम जहाँ 6टा ऑलमोस्ट हो गला आम 6टा हो आसी पहुँचलु तो ये बसीगलु सान्वी तार लास्ट मोमेंट सब किसी मिस करगला तो ये एमती माने गैलरी टाइप रो सब अच्छी तो ये बसिकी से माने देखेबे शोटा देखेबे आम देखिबा Yeah, coming out here from the woods is Ginger. Making a nice grab of that lure today. So she took it right down there. You guys are arguably the largest owl in the world. He's going to come up nice and close. Take a good look at him. I was just sitting here looking around. I'm going to break a bit of a misconception for you guys. So we've often heard or we know that the owls can turn their head 360 degrees. Well, that's in fact a myth. If an owl could turn their head 360 degrees, they would in fact strangle themselves. So obviously that's not ideal. But they come from storks, right? These guys come, drop these babies off right at our doorstep. Flying around for you guys today is Blanco
And Blanco is a European white stork. Europe again, and obviously that 9 months coincides with the length of a human pregnancy. There's not actually many trees for these guys to perch on, so they've actually adapted to becoming very good ground hunters. They can fly, as Johnny is demonstrating, popping up to that pole, but they're a bit of a heavier bird too, so they prefer to be on the ground, as flying is quite a lot of hard work. They're very smart birds. These guys have often been found flipping over flower pots to find some nice tasty grubs. That might be underneath a flower pot, or they're often going down into the burrows and dens of smaller animals, like Johnny's demonstrating right here. Because if you're going down into a burrow, you're often finding a nice tasty... Alright, let's get this thing going here. Oh. Alright, you guys just be careful in there, okay? Whatever you do, just stay alive. Okay, release the lions! No, we're not doing that. Alright, I need you guys to just follow me. Stay on this side of me, we're going to go for a little walk down here, okay? Awesome. So what these guys are actually going to be doing, they're going to be racing against a pair of our birds. So obviously we know birds are good at flying, but these birds in particular are good on the ground. So we're going to be demonstrating a video on the ground, have a little race against our brave volunteers here. So these birds, they get a bit of a bad reputation. They're not the prettiest birds, but they're actually some of the most important birds that we have here in our environment. So coming out the back for you guys today is Donovan and Dyson. They're going to black vultures. They're going to be flying outfield, grab a little snack, and they're going to join us up here. See, bird. This is bird. Okay, come. Okay, bird. No, you can't go inside. You cannot go inside. No. Tama kaise seta to dekho lo. And you cannot go. Wolves eat things that look like they're dead. Okay, on your marks. Get set, go! Come on! Wow! Wow, this is mayhem! Oh man! Wow, alright, we got some pretty fast volunteers. Awesome. Awesome, alright. Let's hear it for the volunteers, come on! You guys are fast. फाइनाली माने ट्रेन टा माने लास्ट मोमेंट रे पूरा तार गेट टा क्लोज हे होथला आमे आसी पहुंचले एटा लास्ट माने हमर करिवार थिला और सब माने देखिनी जे एटा ही टिके बाकी रह जाइतला आ आमे से देखि के माने एनिमल को देखि के फेरू मु देखिने जे ट्रेन टा आसी के पहुंचला तापर आमे गेट टा क्लोज हो पूर्व पर सानबी को धरि के दौडी जे फाइनली गोटे सीट फांका थिला आसी पहुंच गेले On our left-hand side here, you can see a family of geese and their gondolas. Now we're about to enter a 40-acre reserve consisting mostly of open woodland. Carefully on our right-hand side, you will see a couple of painted turtles sunning themselves on a rock at the moment. They are very common freshwater species, and they're very timid, so they will dive underwater quickly if disturbed. Now, the Nature Boy Scenic Railway. On our left side, you will see a great blue heron driving, flying across the lake right now. Notice how he's keeping his head in an S shape and dragging his feet up behind him as he flies. Nice feel, and your camera's ready. On our right side here, you can see a mallard duck enjoying the scene in the river at the moment. He has a green plumed head, indicating that he is in fact a male. Therefore, look here, family. Home here. They do like to come out and bathe in the sun sometimes, so you may be able to see them. However, they are very difficult to spot. स्लाइड ये छुआ मानकर खेलियापी अच्छी तो सान्डी तो तार स्लाइड देखिकी पागल हो गला सो ताको एबे आनीछु एठी टिके स्लाइड करे नहीं कि तापरे आमे पळेबा घर को पळेबा क्लाइम देन स्लाइड ना जी तू जा पाखु को जाओ सो क्लाइम कर पाइबो ना
गाड़ी पुणे आसियो केमती माँ जीतू एटा से केमती खेलिबो पारिबोनी बे माँ जीतू से एकुटिया बसी स्लाइड करि परिबोनी Hey Sanvi, come here, come this side. Come here. It's okay. No, it's okay. Finally आमे लायन सफारी अफ्रिकन लायन सफारी देखी पळी आसलु बहुत ही भलो थिला माने बहुत सुंदर थिला माने आमे 4 घंटा 5 घंटा ता भीतर रहिलो लोक माने एठी पूरा होल डे आसी की रहउचंदी तो एटा बहुत सुंदर थिला आ बहुत माने सानवी भी बहुत एंजॉय करला आमे माने तो बहुत ही एंजॉय करलु तो आजिर ब्लॉग को मैं एठी रखुची आपण मानक संगे पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय पानी दिए तो से